start. Thanks. Well, fermenters very large vessels to provide a controlled environment for growth of a microorganism. For growth of a microorganism to obtain the desired product. To obtain the desired product. नेक्स्ट अब फर्स्ट ए हेडिंग डालिए इसमें, प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहलिक बेवरेजेस. प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहलिक बेवरेजेस. like beer, wine, whiskey, brandy, or rum, or rum, from the east. Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae. Var, VAR, var. Wine and beer are non-distilled beverages. Wine and beer are non-distilled beverages. Non-distilled beverages, and whiskey, brandy, and rum distilled beverages. Next heading, production of organic acids. Production of organic acids. देखिए, organic acids are produced directly from glucose. Or formed as end products, end products from pyruvate or ethanol. एग्जाम्पल में दे दीजिए ऑर्गेनिक एसिड. एक सिट्रिक एसिड, इसका होता है एस्परजिलस नाइगर. माइक्रोब्स यूज होता है इसका एस्परजिलस नाइगर. नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ विटामिन्स. देखिए, vitamins are organic nitrogenous compounds which are responsible for life sustaining functions inside our body. नेम ऑफ विटामिन में दे दीजिए विटामिन बी,
विटामिन बी, और इसका माइक्रोब सोर्स लिखिए, माइक्रोबियल सोर्स न्यूरोस्पोरा गॉसिपाई। न्यूरोस्पोरा गॉसिपाई। Microbial source of vitamins. Next, production of antibiotics. Heading डालिए, production of antibiotics. Antibiotics are secondary metabolites produced certain microbes which inhibit growth of other microbial pathogens, एग्जाम्पल में दे दीजिए, पेनिसिलिन दे दीजिए, पेनिसिलिन PENICILLIN, ठीक। और इसका सोर्स दीजिए बेटा, पेनिसिलिन का पेनिसिलियम क्राइसोचिनम, पेनिसिलियम क्राइसोगिनम, पेनिसिलियम क्राइसोगिनम। नेक्स्ट, अब डालिए प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स। प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स आपका टेस्ट यही होगा। स्टार्ट। एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट। एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट। दूसरा लिखिए, फूड इंडस्ट्री फर्मेंटेशन प्रोसेसेस, फूड इंडस्ट्री फर्मेंटेशन प्रोसेसेस। एंड तीसरा लिखिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री टू improve the to improve the quality of fabrics। आप इसका एंजाइम दे दीजिए, इनवर्टेज INVERTASE, इनवर्टेज। और इसका सोर्स दे दीजिए बेटा, सैक्रोमाइसिस सर्विसी। सैक्रोमाइसिस सर्विसी। अब डालिए नेक्स्ट, माइक्रोब्स इन स्वेज ट्रीटमेंट। माइक्रोब्स इन स्वेज ट्रीटमेंट। लिखिए, पहले लिखिए स्वेज क्या होता है, स्पेलिंग को डेफिनेशन लिखिए। ए म्युनिसिपल वेस्ट कंटेनिंग ह्यूमन एक्सर्टा EXCERTA, household waste, human exerta, household waste, hospital waste, animal dung, industrial waste,
comma dissolved organic matter, etc. Next, composition of sewage. Contains 99.5% to 99.5% to CO2, 99.9% water, and 0.1% to 0.5% inorganic and organic matter, 0.1% to 0.5% inorganic and organic matter. न्यू लाइन से लिखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन स्वेज. कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं इसमें? बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोआ, निमेटोड्स, एल्गी, एक्सेट्रा. Sewage treatment process included. Sewage treatment processes include. Sewage treatment processes include 4 basic steps. FOUR. 4 basic steps as follows. As follows. First, preliminary treatment, and second, primary treatment, and second, primary treatment, and third, secondary treatment, and fourth, tertiary treatment, and fourth, tertiary treatment. Next, microbes in energy generation. Heading डालिए microbes in energy generation. लिखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ये. बायोगैस इज ए नॉन कन्वेंशियल. अक्षता, बायोगैस क्या होती है बेटा? व्हाट डू यू थिंक अबाउट या व्हाट हैव यू heard about the biogas? Animal dungs. Only animal dungs biogas is here. All the natural manufacturing. What are uses of biogas? Biogas is used in fertilizers in farm. Okay. As pesticides and in that production of methane. Good. Okay. Biogas is a non-conventional and renewable source of energy. Biogas is a non-conventional and renewable source of energy and is obtained by microbial fermentation. Microbial fermentation. It is used as a domestic as well as industrial fuel. And biogas composition is methane, carbon dioxide,
hydrogen sulfide and other gases like CO2, sorry, CO, not CO2, CO, cobalt, N2, not cobalt, carbon monoxide, am I right? CO, N2, H2. अगर आप ऐसे इसको लिखेंगे तो दिस इज कोबाल्ट, एम आई राइट? और अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड. गुड. नेक्स्ट, बायोगैस प्रोडक्शन. हेडिंग डालिए बायोगैस प्रोडक्शन. स्टार्ट. The digester used for biogas production is called biogas plant. A typical biogas plant consists of digester and gas holder. And the raw material as cow, COW cow, that raw material as cow dung, DUNG dung, is fed, FED fed, to the digester through charge pit. सब हॉस्पिटल से है, तुम लोग सब. नेक्स्ट, अब डालो बेटा स्टार्ट. कहाँ थे हम लोग? हाँ जी, गुड. नेक्स्ट, बेनिफिट्स. किसके बेनिफिट्स? बायोगैस के, एम आई राइट? देखिए, इट इज ए चीप, safe and renewable source of energy, can be easily generated, stored and transported. Generated, stored and transported. Next, it can be used for domestic lighting. Cooking, street lighting. Next, it is eco-friendly and does not cause pollution. Prajakta, eco-friendly means? Eco-friendly. बट इको फ्रेंडली का इसमें क्या मीन्स है? जो लाइन आ रही है आपकी, गुड. इट इज इको फ्रेंडली एंड डज नॉट कॉज पॉल्यूशन. ठीक. एंड इम्बैलेंस ऑफ द एनवायरमेंट. ठीक. नेक्स्ट, हेडिंग डालो बेटा. रोल ऑफ माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स. रोल ऑफ माइक्रोब्स
role of microbes as biocontrol agent. Biocontrol is use of biological methods to control diseases and pests. To control diseases and pests. Biocontrol agents, microbes that cause the disease, microbes that cause the disease to the paste, due to the paste, or kill them. ये क्या मतलब हुआ? डिजीज टू द पेस्ट और किल देम. डिजीज टू द पेस्ट और किल देम. इस लाइन का आप मीन बताइए मुझे. पेस्ट कंट्रोल कराते हैं ना, है ना. गुड गुड गुड, वेरी नाइस. या फिर किल देम, दो ही ऑप्शन होते हैं, ठीक है ना. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोबियल कंट्रोल बेटा. एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोबियल कंट्रोल लिखिए. एग्जाम्पल है बेसिलस, स्पेल कर रही हूं मैं, BACILLUS, बेसिलस थुरिंजिनेसिस का स्पेलिंग लिखिए THURINGINESIS, थुरिंजिनेसिस. ब्रैकेट में BT कर दो. गुड. It is pathogenic to butterfly and caterpillars. It is pathogenic to butterfly, caterpillars. सेकेंड लिख दीजिए ट्राइकोडर्मा. ट्राइकोडर्मा, TRICHO, ट्राइकोडर्मा species are free living fungi that are pathogenic to several SEVERAL soil borne borne fungal plant pathogens. लास्ट हेडिंग डालिए बेटा चैप्टर का, रोल ऑफ माइक्रोब्स एज बायोफर्टिलाइजर्स. रोल ऑफ माइक्रोब्स एज बायोफर्टिलाइजर्स. लिखिए फर्टिलाइजर्स, हेडिंग डालते जाइए, कॉमा इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, कॉमा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स एंड बायोफर्टिलाइजर्स, BIO बायोफर्टिलाइजर्स. ठीक, इनमें रोल होता है माइक्रोब्स का. ठीक है, अब हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ बायोफर्टिलाइजर्स. टाइप्स ऑफ बायोफर्टिलाइजर्स. आपको CET का डेट आ गया है ना? 11 मतलब 11 to, तो आपका 11 to 15 के बीच में कभी भी हो सकता है. कितने दिन चलता है पेपर? वैसे तो 5 to 15 अगस्त से 5 to 10 PCM, 12 to 15 PCB वालों का PCM, बाकी फिर PCM. ऑनलाइन पेपर तो कौन सा बैच वाइज इस बार डेट बहुत आगे हो जाता है ना. और नीट की तो अभी आई नहीं है. नीट पहले होने
17 जुलाई है शायद उसका है, हाँ ये तो अच्छे डब्ल्यू 17 जुलाई ना। लिखिए टाइप्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स में लिखिए नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइजर्स, नेमिंग दीजिए नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइजर्स। नाइट्रोजन फिक्सिंग मैंने बताया था ना जब नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा रही थी। नेक्स्ट फॉस्फेट solubilizing biofertilizers, phosphate solubilizing biofertilizers, next compost making biofertilizers, compost making biofertilizers, next cyanobacteria, CYANO, cyanobacteria, and last fungal biofertilizers, FUNGAL, fungal biofertilizers। लास्ट में लाइन डालिए बायो फर्टिलाइजर्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म, राइजोबियम, राइजोबियम कॉमा एजोटोबैक्टर, कॉमा एजोस्पाइरिलम, एजोस्पाइरिलम, नेक्स्ट एनाबीना, ANA BAENA एनाबीना, कॉमा नेक्स्ट मतलब एजोला, AZOLLA। आप बेनिफिट्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर और लिखिए लास्ट में। अब आपका चैप्टर एंड होगा। बेनिफिट्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स, बेनिफिट्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स। लिखिए बेटा लो कॉस्ट, लो कॉस्ट एंड फ्री फ्रॉम pollution hazards, free from pollution hazards, HAZARDS। next increase soil fertility, increase soil fertility, next biofertilizers enhances, biofertilizers enhances physico chemical properties, physico chemical properties of soil like texture, of soil like SOIL, soil like textures, structure, pH, comma water holding capacity of soil, water holding capacity of soil। स्टॉप, 2 मिनट आप बैठिए, मैं आपका नेक्स्ट चैप्टर देती हूँ लास्ट। आप पानी पी लीजिए तब तक। टेक्नोलॉजी, अक्षता तुम नीट वाले बैच नहीं ज्वाइन करोगी क्या? चारों नहीं, ये है और है कल से है 11 तारीख से शायद, कल से मुझे बताया। I don't know about that. I didn't hear about it. Yeah. So, have you paid? Have you paid? Start बेटा बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी,
बायोटेक्नोलॉजी। लिखो बेटा, पहली बात तो इसके डेफिनेशन लिखिए। द यूज ऑफ लिविंग सेल्स, द यूज ऑफ लिविंग सेल्स and bacteria in industrial and scientific processes ठीक है। नाउ न्यू लाइन से लिखिए, अकॉर्डिंग टू OCED, कैपिटल लेटर लिखना चाह रहा हूं, अकॉर्डिंग टू OCED, ब्रैकेट में बेटा इसकी फुल फॉर्म दीजिए, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट 1981। The application of scientific and engineering principles to the processing of materials, by biological agents to provide by biological agents to provide TO2 provide goods and service to the human welfare। नीला से लिखिए, ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी was based on fermentation technology, using microorganisms as in the preparation of curd, curd, ghee, ghee, cheese, etc। लिखिए बेटा, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी is combination of biology and production technology based on genetic engineering, न्यू लाइन से लिखिए बेटा, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, लिखिए, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन टू टेक्निक्स। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी is based on two techniques. Number one, genetic engineering, and number two, chemical engineering।
Next heading, technique of, next heading डालो बेटा, technique of gene cloning and rDNA technology, small r DNA technology. अब सबसे पहले आप जीन क्लोनिंग की डेफिनेशन लिखिए. व्हाट इज जीन क्लोनिंग? लिखिए, जीन क्लोनिंग इज द प्रोसेस, जीन क्लोनिंग इज द प्रोसेस in which a gene of interest is located and copied copied out of all the DNA, out of all the DNA extracted from an organism, extracted from an organism. नेक्स्ट आरडीएनए. आरडीएनए की फॉर्म्स होती है फुल रिकॉम्बिनेंट डीएनए. ठीक, इसको भी डिफाइन कीजिए पहले, तब हम टेक्निक पढ़ाएंगे. देखिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आरडीएनए लिखा रही हूं मैं. व्हाट इज आरडीएनए? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स यूजिंग enzymes and various laboratory techniques to manipulate and isolate DNA segments of interest. This method can be used to combine DNA from different species or to create genes with new function. अब आपने क्या हेडिंग अपनी कॉपी पर नोट डाउन किया था? टेक्निक ऑफ जीन क्लोनिंग एंड आरडीएनए टेक्नोलॉजी. उसके नीचे लिखिए, मैंने आपको लिखा ही नहीं है एक भी लाइन. पहले ए प्रोसेस लिखिए इसकी, ऐसे लिखिए, टेक्निक ऑफ जीन क्लोनिंग एंड आरडीएनए टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन, हेडिंग डालिए, टूल्स एंड टेक्निक्स, बेस्ड ऑन टूल्स एंड टेक्निक्स. ठीक, इसमें पहला हेडिंग डालिए इलेक्ट्रोफोरेसिस. देखिए, इलेक्ट्रोफोरेसिस सुनिए पहले तो. इलेक्ट्रोफोरेसिस आपने कोई वर्ड सुना है अभी तक? नो. देखिए, द सेपरेशन ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल्स, नोट कीजिए, द सेपरेशन ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल्स applying an electric field
आपने वो तो सुने होंगे ना, कैथोड एनोड. गुड 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 गुड. द सेपरेशन ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल्स applying an electric field. It is applied for the separation of DNA, RNA and proteins. नोट कीजिए. एक मिनट. इलेक्ट्रोफोरेसिस की पर्टिकुलर डेफिनेशन लिखिए बेटा पहले. इलेक्ट्रोफोरेसिस. इलेक्ट्रोफोरेसिस लिखिए. स्टार्ट. इलेक्ट्रोफोरेसिस इज ए लेबोरेटरी टेक्निक used to separate DNA, RNA and protein molecules. DNA, RNA and protein molecules based on their size and electrical charge. Based on their size and electrical charge. अब लिखिए डिफरेंट मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस. डिफरेंट मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस. डिफरेंट मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस. स्टार्ट. लिखिए. पहले तो ऐसे में लिखिए यूज ऑफ एग्रोस जेल. एग्रोस जेल यूज किया जाता है इसमें. AGAROS अंडरलाइन मार्क के नोट कीजिए. यूज ऑफ एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. ठीक. कॉमा पेज PAG पेज एंड FDA. 10 नंबरच्या ऑर्डरमध्ये कोणाच्या बॅग आहेत? उचलून घ्या. नेक्स्ट बेटा SDA पेज एंड FDA पेज. आज तो लास्ट हो ही जाएगा. टेस्ट हो जाएगा. एंड जो सर्विस के हाँ, और इसको आना है वो आएगा. उसका बैग था. आज पीरियड्स हुए होंगे ना सारे. फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री. हाँ, हम कहाँ थे? लिख लिया ना मेथड. डिफरेंट मेथड्स लिखे ना. अब एडेनोसिन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR. You can say in short form PCR. Polymerase chain reaction. I repeat again. Polymerase chain reaction. Polymerase chain reaction. लिखिए. कैरीमुलिस. KARY MULLIS. कैरीमुलिस discovered PCR. कैरीमुलिस discovered PCR. Now note down. PCR is a device
PCR is a device used for in vitro, used for in vitro. आप in vitro वर्ड तो समझते हैं ना, in vitro amplification in vitro amplification of a desired DNA segment, of a desired DNA segment. And PCR can generate, वर्ड को अंडरस्टैंड कीजिए, and PCR can generate a billion copies, a billion copies of the desired segment of DNA RNA. You can see on the whiteboard DNA RNA. यानी कि आप क्या कह सकते हैं कि पीसीआर क्या है, जनरेट करता है ना सेगमेंट ऑफ डीएनए एंड आरएनए. ठीक, नोट कीजिए. नेक्स्ट, and it involves automatic thermal cycles, automatic thermal cycles for denaturation and renaturation, for denaturation and renaturation of double stranded DNA. Now बेटा हेडिंग डालो PCR requires. बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है ये. PCR requires, PCR requires. Number 1, DNA containing the desired segment to be amplified. DNA containing the desired segment to be amplified. Next, axis of two primer and molecules. Axis of two primer and molecules. Primer सुना है कभी शिवानी? वो प्राइमर नहीं है. प्राइमर, व्हाट आर प्राइमर्स? अभी मैं डिफाइन करा देती हूँ. व्हाट हैपेंड, क्या लिखा तुमने? एक्सिस ऑफ टू प्राइमर्स एंड मॉलिक्यूल्स. अरे बाप रे, बंद कर दे भाई इसको, जाते जाते तो तोड़ जाएंगे इसको. हाँ बेटा, क्या लिखा आपने? एक्सिस ऑफ टू प्राइमर एंड मॉलिक्यूल्स. प्राइमर को डिफाइन कर दीजिए, नीचे आपको पता लग जाएगा. लिखिए, प्राइमर आपको स्पेसिफिकली पीसीआर में डिफाइन करना है. हम बात पीसीआर की कर रहे हैं ना. पीसीआर क्या करता है? जनरेट करता है ना डीएनए सेगमेंट को. लिखिए, इन द पीसीआर मेथड, इन द पीसीआर मेथड a part of primers hybridize with the sample DNA, and defines the region that will be amplified, resulting million of copies. ठीक, resulting million of copies. And primers are also used in DNA sequencing methods.
फटाफट नोट कीजिए। मैकेनिज्म ऑफ पीसीआर कंप्लीटेड इन 3 स्टेप्स। मैकेनिज्म ऑफ पीसीआर कंप्लीटेड इन 3 स्टेप्स। Number 1, denaturation. Number 2, annealing. ANNEALING. ANNEALING, annealing and renaturation. Now, methodology for rDNA technology. Methodology for rDNA technology. Methodology for rDNA technology. Methodology for rDNA technology. देखिए start. There are 6 steps involved in it. There are 6 steps involved in it. Number 1, isolation of DNA. Isolation of DNA from the donor organism. From the donor organism. Next, insertion. Insertion, INSERTION. Insertion of desired gene into a cloning vector. Into a cloning vector. And C लिखिए, transfer of rDNA. Transfer of rDNA into suitable competent host or cloning organism. And D, selection of transformed host cell. Selection of the transformed host cell. अभी हम लोग वो भी चैप्टर थोड़ा डिस्कस करेंगे जो आपका टेस्ट है बेटा, है ना। थोड़ा कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगी। आप बुक लाए है ना? टेस्ट है यानी वो फिक्स भी है। वो भी फिक्स नहीं है। रियली? वो बोले कि हम डालेंगे ग्रुप में, तो ग्रुप में नहीं किया अभी तक। सी हुआ ना? डी डालो बेटा। सिलेक्शन ऑफ हो गया। ई, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल। मल्टीप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल। Multiplication of transformed host cell. Next, F, expression of the gene. Next, expression of the gene to obtain TO2, obtain the desired product. नोट कीजिए बेटा, एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। आपने कभी, आप लोग इतने कम स्टूडेंट हैं, आपने कभी क्वेश्चंस वाले कुछ फिल्टर करे हैं? मुझे लगता है जब तक मैंने सीट पे पढ़ाया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ आपने जो मिट्टी पीछे दिए हुए हैं कुछ आपने स्टडी करे हैं? तो पीछे एमसीक्यूज दे रखे हैं सारे चैप्टर्स में, ठीक है ना? ठीक, लिखिए एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। फर्स्ट हेडिंग डालिए हेल्थ केयर बायोटेक्नोलॉजी। हेल्थ केयर
बायोटेक्नोलॉजी। देखिए, मैंने आपको बायोटेक्नोलॉजी की टैब डिफाइन कराया था अभी शिवानी, द यूज ऑफ लिविंग सेल्स एंड बैक्टीरिया इन द इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक प्रोसेस। तो एक बात बताइए, हेल्थ केयर बायोटेक्नोलॉजी एक साइंटिफिक प्रोसेस है कि नहीं है? ठीक, सॉरी, गुड 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 गुड, यू आर राइट। नोट डाउन कीजिए, हेल्थ केयर बायोटेक्नोलॉजी रेफर्स टू ए healthcare biotechnology refers to a medicinal or diagnostic product, medicinal or diagnostic product, diagnostic बताया था ना मैंने, product or a vaccine or a or a vaccine, and it offers a personalized diagnostic solutions for organ transplant, stem cell technology, genetic counseling, forensic medicine. Prajakta, what did you hear about forensic medicine? क्या होती है बेटा forensic medicine? आप बताइए बस। Which type of high levels? I didn't mean what you mean. I didn't understand what you mean. Achha, what do you know about forensic? Did you hear about this word? Yeah, tell me, what is forensic? Which type of test बेटा? टेस्ट तो कई सारी लेबोरेटरीज में होते हैं, स्पेसिफिकली फॉरेंसिक वर्ड बताइए आप। मैंने ये नहीं पूछा कहाँ यूज किया जाता है फॉरेंसिक वर्ड, क्राइम इन्वेस्टिगेशन में, ये तो आप लोगों ने देखा ही है, सीआईडी आता था एक, उसमें फॉरेंसिक लेबोरेटरी आती थी। मैं ये पूछ रही हूँ फॉरेंसिक वर्ड का मतलब क्या होता है, किस टाइप की टेस्टिंग, किस टाइप को आइडेंटिफाई किया जाता है? हाँ, मतलब ये कि जो बॉडीज आइडेंटिफाई नहीं होती हैं, जिनकी आइडेंटिटी खत्म हो चुकी होती है, या जिनको डेड हुए महीनों हो जाते हैं, सालों हो जाते हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है फॉरेंसिक्स में। अदर वर्ड्स में यू कैन से लाइक फॉसिल्स, am I right? फॉसिल्स के जरिए अगर आप with the help of forensic lab, if you will try after that, I think you can explain and you can identify कि ये बॉडी किसकी है, इसकी क्या एज रही होगी, मेल है कि फीमेल है, कितनी देर पहले मरा है, क्या कारण था, कॉज क्या था उसका, क्या रीजन था मरने का, ठीक है, बाय एक्सीडेंटल, बाय पॉइजनस, ठीक, व्हाटएवर जो भी था। गुड, यू आर राइट। फोरेंसिक मेडिसिन, जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग एंड कैरियोटाइपिंग, genetic fingerprinting and karyotyping, genetic fingerprinting and karyotyping, ठीक। बी डालो बेटा ह्यूमन इंसुलिन, you know already कि डायबिटीज मेलिटस फर्स्ट इज कॉज्ड बाय इंसुलिन, हमारा लिखिए बेटा,
Diabetes mellitus is caused by insulin deficiency. Diabetes mellitus is caused by insulin deficiency. Insulin is later produced. Insulin is later, Latter, later produced by trypsin treatment. by trypsin treatment. सेकंड हेडिंग डालो बेटा. थर्ड, नो, फर्स्ट ह्यूमन इंसुलिन था ना. अभी तक पहले आपका हेडिंग पढ़वाया था मैंने, हेल्थ केयर बायोटेक्नोलॉजी. उसके अंदर ए था ह्यूमन इंसुलिन. अब बी आएगा वैक्सीन प्रोडक्शन. वैक्सीन प्रोडक्शन. A vaccine is a biological preparation. A vaccine is a biological preparation that provides active acquired immunity against a certain disease. And vaccine have eliminated smallpox, polio, and other deadly disease. ठीक. अब आपने पहला डाला था हेल्थ केयर बायोटेक्नोलॉजी. बी डालिए आप एग्रीकल्चर. लिखिए एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. helps in modifying plants, animals, and microorganisms. And improve agricultural productivity. New and next comment लिखिए tissue culture is used in large scale production of plants. नेक्स्ट सी डालिए आप. सी जीन थेरेपी. लिखिए इन जीन थेरेपी DNA that codes codes for specific genes, for specific genes is delivered to TO2 individual cells in the body. And the forms of gene therapy by
germline gene therapy, germline gene therapy. इसी के आगे स्टार्ट कर देना बेटा. In this, healthy genes are germline gene therapy. In this, healthy genes are introduced. Healthy genes are introduced into germ cells. Into germ cells like sperms, eggs, and early embryos. Shivani, what do you think about early embryos? Embryo, what is the difference between embryos and early embryos? फीटस पहले आता है या एम्ब्रियो पहले आता है? पहले आता है. उससे भी पहले अर्ली एम्ब्रियो आता है. तो अर्ली एम्ब्रियो कौन सा होता है? Starting stage of the You can say the zygote like early embryo. Zygote को early embryo बोल सकती हो. Yes, zygote ही early embryo होता है. ठीक है? Good, you are right. हाँ बेटा, कहाँ थे हम लोग? Sorry, हाँ germline theory, early embryo. And second, somatic cell gene therapy. And second, somatic gene therapy. Somatic cell gene therapy. Somatic cell gene therapy. In this, introduction of healthy genes. In this, introduction of healthy genes into somatic cells like bone marrow cells, comma central nervous system, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम. क्या डिफरेंस होता है? एक वर्ड होता है नर्वस सिस्टम. मैम, नाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर इज नर्वस सिस्टम. ओके, एंड व्हाट इज डिफरेंसेस बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम? Is this right definition of the central nervous system? Central, मैंने पढ़ाया है आपको. मैंने क्या बोला था? मैंने आपको फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन सब पढ़ाया है. ठीक है, आप खुद दिमाग पर जोर डालिए बेटा. नर्वस सिस्टम तो ये हो गया जिसमें आप सारा का सारा कंप्लीट अपना ब्रेन स्टडी करेंगे. इसको साइड हटाइए. अब मैं बात कर रही हूँ. नाउ आई एम गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट central nervous system. spinal cord. Spinal cord. Only spinal cord. Brain. Brain. Which part of brain? Midbrain. Mid brain. जो सब कुछ कंट्रोल करता है. Cerebrum. रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, stored memories, thinking, hypothesis. There are many types of functions controlled by. भी जल्दी भूल गई. घर जाकर नर्वस सिस्टम पढ़ा नहीं. Have you carried the book? मैंने आपको पढ़ाया है. Open your book. Open the chapter of nervous system. जहाँ आपने नोट डाउन कर रखा है. आप खुद आंसर देंगे. का मतलब आपने इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर पेंडिंग में डाला हुआ है. ये चीज गलत है. भले ही आपका जो एग्जाम है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ठीक, गुड. शिवानी, गो बैक. ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ठीक, ब्रेन एंड स्पाइन. आप खुद सोचिए, नर्वस सिस्टम में तो सारा आ गया ना, कंप्लीट स्टडी आ गई.
पर स्पेसिफिकली जो वर्क होता है, जो कनेक्टिविटी आपस में कम्युनिकेशन होता है, वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का ही जो होता है ना, तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. गुड, वेरी नाइस. देखिए स्टार्ट. डी, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स. genetically modified organisms. These are living organisms with artificially manipulated genetic material. And these are combination of plants, animals, bacteria, and virus genes. हेडिंग डालो बेटा अलग से, बिल्कुल अलग से. बायोएथिक्स. बायोएथिक्स क्या होती है? बायोएथिक्स. देखिए स्टार्ट. बायोएथिक्स इज द ethics. Bioethics is the ethics that deals with perception of values which are affected by progress in science and technology. Example: IVF, sperm bank, gene therapy, manipulations, etc. And these concerns are broadly as, मतलब क्या संबंध है इनका, क्या यूज है? नंबर एक, यूज ऑफ एनिमल्स causes great suffering to them. I repeat again, use of animals causes great suffering to them. And next, transfer of human genes. एक्चुअली मैंने नोट डाउन कराना इसलिए जरूरी समझा, एटलीस्ट आपके पास रहेगा तो आप उसे खोल के पढ़ तो सकते हैं, एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए. बोलेंगे तो सिर्फ यही रहेगा, घर जाकर निकल जाएगा. ठीक, कॉपी में रहेगा तो वो आपके साथ रहेगा. ठीक, नेक्स्ट एक और लिख दीजिए. द इंट्रोडक्शन ऑफ insect resistance crops and gene flow and loss of diversity. नेक्स्ट हेडिंग डालिए बेटा, इफेक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ऑन द एनवायरमेंट. Effects of biotechnology on the environment. लिखिए, हर्बिसाइड यूज एंड रेजिस्टेंस. ए लिखिए हेडिंग, हर्बिसाइड
herbicide, herbicide use and resistance. एंड सेकंड लिखिए इफेक्ट्स ऑन अनटारगेटेड स्पीसीज, इफेक्ट्स ऑन अनटारगेटेड स्पीसीज. नेक्स्ट बेटा इफेक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ऑन ह्यूमन हेल्थ. नेक्स्ट लिखिए इफेक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ऑन ह्यूमन हेल्थ. चैप्टर आपका फिनिश होने जा रहा है. इफेक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ऑन ह्यूमन हेल्थ. एलर्जीज, फर्स्ट लिखिए एलर्जीज. सेकंड लिखिए लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स. एंड थर्ड लिखिए फूड एडिटिव्स. फूड एडिटिव्स ADDITIVES. हेडिंग डालिए फटाफट. बायो पेटेंट एंड बायोप्रेसी. बायो पेटेंट एंड बायोप्रेसी. बायोप्रेसी स्टार्ट. बायो पेटेंट में लिखिए पेटेंट इज ए स्पेशल राइट. पेटेंट इज ए स्पेशल राइट granted to the inventor by the government. To the inventor by the government. And biopatent is a biological patent for strains of microorganisms, cell lines, genetically modified strains, DNA sequences, and biotechnological processes. And biopatent are awarded. इसका लाइन का मतलब समझते हो अक्षता. एंड बायोपेटेंट आर अवॉर्डेड. ठीक है ना. गुड. ना बेटा बायोप्रेसी डालो फटाफट. बायोप्रेसी चैप्टर आपका फिनिश हो रहा है. बायोप्रेसी लिखिए पायरेट्स. एक मिनट कट कीजिए. पायरेट्स कट कीजिए. बायोप्रेसी डायरेक्ट लिखिए. बायोप्रेसी मैं अपनी डेफिनेशन में लिखा हूँ. बायोप्रेसी इसमें तो बहुत बेकार लैंग्वेज लिखी हुई है. बायोप्रेसी देखिए बायोप्रेसी happens when researchers or research organizations take biological resources without official sanction, SANCTION,
You can say in other words, नोट कीजिए बेटा, you can say in other words, bioplasty refers to the use of bioresources by multinational companies and other organizations without proper authorization. मतलब समझते हो, विदाउट प्रॉपर अथॉरिटी लेना इस चीज की, ठीक है, गुड, विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम पीपल एंड कंट्रीज कंसर्न्ड, फ्रॉम पीपल एंड कंट्रीज कंसर्न्ड, अच्छा इसके एग्जाम्पल क्या देंगे आप, अगर आप अपना बेसिकली अपने माइंड में थॉट कराया तो इसके एग्जाम्पल, डेफिनेशन पढ़िए पहले और इसका एग्जाम्पल आप बताइए मुझे कि आप इसका एग्जाम्पल क्या है। टर्मरिक, टर्मरिक, वेरी नाइस। वो टर्मरिक्स जो लेकर उसको रखना नहीं चाहिए, वो भी एक हाँ, मतलब आपने कोई भी चीज बिना ऑथराइजेशन के, चाहे वो कंट्रीज की हो चाहे पीपल की हो, पीपल ने ऐड किया है ना वर्ड, पीपल ऐड किया है, मतलब मैं तुम्हारी ऑथराइजेशन, मैं तुम्हारी परमिशन के बिना कोई काम करता हूँ, राइट, बिना परमिशन। अब जैसे सपोज करिए आपका ये यूनिटी ले लीजिए आप, ठीक है, किसी का स्टूडेंट नया एडमिशन नहीं है, फिर वो बैठा है क्लास में, ठीक है ना, बट बायोप्रेसी की बात हो रही है यहाँ पे, वो तो आपका बेसिक एग्जाम्पल हुआ, बायोप्रेसी लाइक हल्दी, टर्मरिक, समझ रहे ना, डिड यू रिमेम्बर प्राजक्ता, आपका चैप्टर मैंने यहाँ पे ये फिनिश कर दिया, ठीक है, मेरी नज़र में सीट का चैप्टर जो आपका सिलेबस था वो कंप्लीट हो चुका है, मैंने पूरी तरह कोशिश ये करी है कि कम से कम शब्दों में और सफिशिएंट। अब आप एक बार नोट कर लीजिए, बुक देख लीजिए, बुक आपके पास है तो देख लीजिए, नहीं है तो मुझसे ले लीजिए, कोई भी चीज ऐसी है जो आपको पुरानी डिस्कस करनी है, कुछ पूछना है, ठीक है, मेरी तरफ से ओवर हो चुका है। ये मुझे पता था कि आज कंप्लीट हो जाएगा, कल ज्यादा था आज कम था। बहुत बड़ा चैप्टर था, यू आर राइट। अभी आपका मैसेज आएगा पर आया नहीं है अभी, टेस्ट का ना, वो भी वो मैसेज आएगा, वो बाकी चीज़ हमने को बोलेंगे कंप्लीट कर लिया, देखते हैं होगा तो हम इन्फॉर्म करेंगे ग्रुप पे, वरना आप अपनी सेल्फ स्टडी करेंगी। हाँ, तो आज लास्ट डे वाली क्लास है, इसके बाद मतलब नहीं होगा, तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, फिक्स में 45 डेज तक उसकी खत्म हो गई, फिर भी चैनल को सारा तो शेड्यूल पे हो गया ना बेटा, मैं जरा देरी से कॉल करती हूँ, पहले स्टॉप कर रहे हैं इसको। हाँ, बाकी के सर ने भी सिखा दिया कुछ